अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। आज हम लोग नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, Pfsense ओपन सोर्स फायरवॉल। बेसिकली फायरवॉल हम लोग नेटवर्क प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम लोग के फायरवॉल में दो इंटरफेसेस हैं, लैन और वैन। लैन जो है ना हम लोग के पास ट्रस्टेड नेटवर्क है और वैन जो है ना अनट्रस्टेड है। फायरवॉल आपके ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, मतलब किसी ट्रैफिक को आपने अलाउ करनी है या किसी ट्रैफिक को आपने ब्लॉक करनी है। ब्लॉकेज आप आईपी बेस पे कर सकते हैं, सोर्स आईपी बेस पे, पोर्ट बेस पे कर सकते हैं, प्रोटोकॉल बेस पे आप ब्लॉक कर सकते हैं। Pfsense ओपन सोर्स फायरवॉल। इन दिस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ओवरव्यू ऑफ Pfsense, लाइसेंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, features of Pfsense, how to download ISO file, course content. Pfsense overview. Pfsense is an open source firewall, router, computer software distribution of FreeBSD. Provide network solutions, work as a router. It is repeatedly becoming the world's most trusted open source network security solution. लाइसेंस फ्री, इसका लाइसेंस बिल्कुल फ्री आपको ओपन सोर्स मिलेगा। Reliable hardware and software. It can be installed on a physical machine or as a virtual machine to make dedicated firewall router for a network. VMware वर्कस्टेशन और VMware ESXi में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। Minimum requirement 1 GB RAM, 1 GHz processor. Recommended 2 GB, 2 GHz processor, 10 GB और एटलीस्ट 2 नेटवर्क्स चाहिए इसके लिए, फिजिकल में भी और VMware को भी वर्चुअल मशीन में आप इंस्टॉल करने के लिए 2 लिंक कार्ड्स होने चाहिए उनके पास। Can be configured through web interface. Can be upgraded to a latest version. Features of Pfsense Firewall, स्टेट टेबल, इन चीज़ों को हम लोग देखते जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में। नेट, पेट, हाई अवेलेबिलिटी, वैन फ्लेयर, लोड बैलेंसिंग, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, PPPoE सर्वर, monitoring traffic tools. More we'll discuss in detail inshallah. Pfsense ISO image. से आप इसका इमेज वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री सोर्स, ओपन, बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है और इट्स फ्री। सपोर्ट 64 बिट में भी आपको मिलेगा और 32 बिट में भी अवेलेबल है। ये के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।